students, in today's lecture we will continue with the problems to find an analytic function if its real or imaginary part is given. In last lecture we solved one problem to find analytic function and its real part was given. Here we will see the same question for imaginary part. V is given, we have to find the whole function u plus iv. So in this case also procedure remains same. We will start with finding derivative of this function f dash of z. Then we will use Cauchy-Riemann equations depending upon the given part, real or imaginary. Then we will find both the derivatives and then Milling-Thomson's method, substituting x equal to z and y equal to 0. That will give you f dash of z in terms of z. So finally on integration you will get the required function f of z. So procedure is again same here. Required analytic function is f of z equals u plus iv. This is the function which we need to find. Now second step, as we discussed, just differentiating on both sides with respect to x. So f dash of z will be ux plus I times vx. Now we have to use Cauchy-Riemann equations depending upon what is given in the question. So if v is given, no problem with vx. We can easily find derivative of v with respect to x. But what about this? U is not given in the question. So go for Cauchy-Riemann equations. Replace ux by vy. Value of ux is vy. Call it as equation 1. Now we have to just find both the derivatives here and then Milling-Thomson's method. Okay. So now what is the given function? V is x square minus y square plus x over x square plus y square. So just finding the derivatives, firstly differentiating v partially with respect to x. So y will become a constant. So derivative of x square 2x and y square will give you 0. For second part we can go for u upon v rule. So just recall what is u upon v rule for differentiation. So you will start with writing square of denominator. So denominator में जो भी term है as it is उसका square लिखना है. अब न्यूमरेटर में टर्म्स कैसे लिखोगे? पहले जो टर्म डिनोमिनेटर में था उसको एज इट इज लिखना है. देन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. सो x का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस. नाउ न्यूमरेटर एज इट इज x इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का अगेन 0. एज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y हो गया कांस्टेंट. Okay, and similarly we can differentiate given function partially with respect to y to get this vy. So अब x स्क्वायर कांस्टेंट हो गया तो उसका डेरिवेटिव 0 माइनस वाई स्क्वायर से मिल गया आपको माइनस 2y. इन सेकेंड टर्म अगेन वी कैन गो फॉर u अपॉन v रूल. डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना है आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर. अब न्यूमरेटर में टर्म्स कैसे लिखते हैं? डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव. लेकिन न्यूमरेटर फ्री फ्रॉम y है और हम y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो गया 0. सो फर्स्ट टर्म पूरा 0 बन जाएगा. नो नीड टू राइट इट, आई विल डायरेक्टली राइट द सेकेंड टर्म माइनस. नाउ न्यूमरेटर एज इट इज दैट इज x इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का 2y. Okay, so this is the answer for vy. Now we will go for Milling-Thomson's method, means we will just substitute x equal to z and y equal to 0. So what you will get after this substitution? Vx will become 2z plus this will be z square minus x equal to z put किया तो ये हो गया 2z square upon z square plus 0 the whole square means z raised to 4. So just simplifying it, it is 2z minus this is z square minus 2z square means minus z square upon z raised to 4, that is 1 upon z square. That is the answer for Vx. And similarly Vy will become 0 and here again if you put y equal to 0, numerator will become 0 means whole function will be 0. So again Vy is 0 here. So substituting both values in equation 1, you will get f dash of z in terms of z. Then we have to just integrate it to get the final answer. So see, this was the equation 1, f dash of z equals Vy plus I times Vx. So Vy का वैल्यू पुट कीजिए, that is 0, no need to write it. I times Vx and Vx is 2z minus 1 upon z square. So we just need to integrate this function with respect to z to get the final answer f of z. Okay. So integrating on both sides, यहाँ पे derivative integration cancel हो गया, आपको मिल गया required function f of z. Now what is the integration here? I as it is constant in multiplication.
Again 2 as it is, integration of z is z square upon 2, so that 2 will get cancelled. And integration of 1 upon z square is minus 1 upon z, तो यहाँ पे already minus sign है तो plus. Okay, and I can write here plus c. See how I am finding integration of z square. That 1 upon z square can be written as z raised to minus 2. Now just use the formula integration of x raised to n. It is x raised to n plus 1 upon n plus 1. So it will be z inverse upon minus 1, and z inverse can be written as 1 upon z, और minus already यहाँ पर है तो plus हो गया. Okay, so this is the required analytic function f of z for the given imaginary part. Let us consider one more problem. Exactly same question again. Find an analytic function whose imaginary part is given in the question. So it is sine hyperbolic 2y upon cos 2x plus cos hyperbolic 2y. Okay, so again v is given, we have to find u plus iv. So no need to say that, we will follow exactly same procedure. So let us assume that required analytic function is f of z equals u plus iv. So throughout the chapter we are going to use the same notation, f of z equals u plus iv. Then differentiating on both sides with respective x will gives you f dash of z equals ux plus I times vx. ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप. अब थर्ड स्टेप क्या है? यूज कॉची-रीमन इक्वेशंस. सो अगेन v is given, so this will be vy plus I times vx, because using CR equations ux is vy. Now we have to find both the derivatives. So just see what is the given function. Now given function is sine hyperbolic 2y upon cos 2x plus cos hyperbolic 2y. So one by one differentiating it with respect to both variables x and y. So doing it with respect to x first, what will be vx? We can go for u upon v rule, denominator का square. So it is cos 2x plus cos hyperbolic 2y the whole square. अब यहाँ पे टर्म्स कैसे लिखना है? डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव. बट हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्टिव x, और न्यूमरेटर है कांस्टेंट विद रिस्पेक्टिव दैट, तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0. सो वी विल राइट द सेकेंड टर्म डायरेक्टली, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. सो डिनोमिनेटर में cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू साइन 2x, एंड cos हाइपरबोलिक 2y का डेरिवेटिव 0, बिकॉज हम विद रिस्पेक्टिव x डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ओके, एंड सिमिलरली vy will be again using u upon v rule. So denominator का स्क्वायर आ गया यहां पर, then denominator as it is into derivative of numerator. हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्टिव y. तो साइन हाइपरबोलिक 2y का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक 2y, देन यूजिंग चेन रूल 2y का डेरिवेटिव 2. ओके, माइनस नाउ न्यूमरेटर एज इट इज साइन हाइपरबोलिक 2y इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. सो cos 2x का 0, क्योंकि हम y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एंड cos हाइपरबोलिक 2y का 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक 2y. ओके, नेक्स्ट इज टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 0, दैट इज यूजिंग मिलन-थॉम्सन्स मेथड, एंड देन सॉल्विंग द इक्वेशन 1 for f dash of z in terms of z. So see what we will get if you put x equal to z and y equal to 0 in vx. यहाँ पे आप देख सकते हो y, यहाँ पे आप देख सकते हो साइन हाइपरबोलिक 2y है, आप y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म हो गया 0, बिकॉज साइन हाइपरबोलिक 0 इज 0. सो vx विल बी 0 अगेन. What will be vy? It will be cos 2z plus cos hyperbolic 0, that is 1, into cos hyperbolic 0 again 1. Minus this value will be 0 because sine hyperbolic 0 is 0. So we will get here cos 2z plus 1, or denominator may be cos 2z plus 1 the whole square. So see what vy will become after that substitution. It is cos 2z plus 1 into cos hyperbolic 0 again 1. So into 2. So it is 2 times 1 plus cos 2z, और denominator भी same है आपका. It is cos 2z
प्लस 1 द होल स्क्वायर. ये टर्म तो जीरो है बिकॉज साइन हाइपरबोलिक जीरो इज जीरो. सो डिनोमिनेटर इज सेम अगेन 1 प्लस कॉस 2z द होल स्क्वायर. So it is simply 2 upon 1 plus cos 2z. Okay. Now substituting it in equation 1. So what equation 1 will become? F dash of z equals, just recall what was equation 1? F dash of z equal to Vy plus I times Vx. And Vx is 0. So no need to write second part. So we have to just integrate here with respect to z to get the required answer f of z. So integrating on both sides with respect to z, RHS हो गया 2 upon 1 plus cos 2z. Now how to find integration of this function? Just require the formula cos square theta is 1 plus cos 2 theta upon 2. So we are having reverse of it here. So that will be 1 upon cos square theta, means it is sec square z dz. And integration of sec square z is tan z. So required analytic function is tan z. Okay, so this is the way to solve problems to find an analytic function if its real or imaginary part is given. In next lecture we will consider similar problems with a small difference. Thank you.